Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we will discuss about homonyms, rhyming words and compound words. Dear students, हमने इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का कोर्स शुरू किया है. ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है. हमने टॉपिक नंबर 1 पढ़ा अल्फ़ाबेट एंड लेटर और उसके मुतालिक डिटेल को पढ़ा. टॉपिक नंबर 2 वर्ड को हमने शुरू किया है. हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था कि वर्ड क्या है. वर्ड्स इज द कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो आपको कोई ख़ास मीनिंग दे रहे हो, उसको हम वर्ड कहते हैं. हमने टाइप्स ऑफ वर्ड को मुख्तलिफ बेसिस पर कैटेगराइज किया था. हमने कल टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग शुरू किया था, जिसमें हमने दो टाइप सिनोनिम और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ा था. इंशाल्लाह टुडे वी विल डिस्कस अबाउट होमोनिम्स. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड का लफ्ज़ तो सुना होगा. पेयर ऑफ वर्ड्स मीन अल्फाज के जोड़े. मिसाल के तौर पर एक्सेप्ट और एक्सेप्टर, these two are words having the same pronunciation. लेकिन इसका मीनिंग अगर मैं लिखना चाहूँ, एक्सेप्ट है एक, एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्टर, तो इनका जो मीनिंग है एक के अलावा और दूसरा हमारे पास है कबूल करना, मानना, और उनकी जो स्पेलिंग है वो मुख्तलिफ है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. इसको हम पेयर ऑफ वर्ड कहते हैं. तो इंग्लिश लिटरेचर में इस पेयर ऑफ वर्ड को हमने होमोनिम्स का नाम दिया है. वी कैन डिफाइन होमोनिम्स इज द वर्ड्स दैट हैव अ सेम प्रोनाउंसिएशन बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग्स. तो जैसे कि कल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में एक एक क्वालिटी के बारे में जाना था, इसी तरह अगर मुख्तलिफ वर्ड्स में ये दो क्वालिटीज हो, क्वालिटी नंबर 1 एंड क्वालिटी नंबर 2, तो इसको हम होमोनिम्स कहते हैं. वो क्वालिटीज क्या है? नंबर 1 सेम प्रोनाउंसिएशन, नंबर 2 डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग. उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम होमोनिम्स का नाम देते हैं. और जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि इसको आप सिंपल वर्ड्स में पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, होमोनिम्स के एग्जांपल की तरफ जाते हैं. पोर एंड पोर, प्रे एंड प्रे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, बेयर बेयर बेयर. अगर आप इन वर्ड्स पर गौर व फिक्र करते हैं, सोच करते हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन में तो सेम है लेकिन इनका स्पेलिंग और इनके मीनिंग में डिफरेंट आ रहा है. अब हमारे पास हमारा फोकस मीनिंग पर होना चाहिए, स्पेलिंग पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास वर्ड्स के स्पेलिंग सेम होती है लेकिन मीनिंग चेंज होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक बेयर का और दूसरा भी बेयर का. मेरे यहाँ पर लिखा भी है. एक बेयर कहते हैं बर्दाश्त को और दूसरा बेयर कहते हैं रीच को. तो these are two words having the same spelling and same pronunciation but different meaning. तो ये भी हमारे पास होमोनिम्स है. हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है पोर का, दूसरा में लिखा है पोर का. पोर कहते हैं गरीब को, जबकि पोर कहते हैं किसी चीज को दूसरी चीज में डालना, वाटर को ग्लास में डालना, पोर. इसी तरह प्रे कहते हैं दुआ मांगना, अल्लाह अलमाइटी से दुआ मांगना, जबकि दूसरा प्रे कहते हैं शिकार को. ठीक है. एक्सेप्ट कबूल करना, दूसरा एक्सेप्ट आता है के अलावा. बेयर एक आता है नंगा, एक बेयर आता है बर्दाश्त और तीसरा बेयर हमारे पास रीच को कहते हैं एनिमल. इसी तरह एक होता है कैपिटल, दूसरा भी होता है कैपिटल. कैपिटल मीन्स सरमाया और दूसरा कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद मीन्स दारुल हुकूमत. इसके अलावा आता है सीरियल एंड सीरियल्स. सीरियल एंड सीरियल, सीरियल कहते हैं हमारे पास अनाज को, जबकि सीरियल कहते हैं ड्रामा सीरियल, सीरीज वाला सीरियल हो. This was all about homonyms. Now we will discuss about rhyming word and compound. So we can define rhyming words is, rhyming words are the words that have a same ending sound. ऐसे words जिनका ending sound same हो. Dear students, आपने rhyming words को कभी भी homonyms के साथ mix नहीं करना. राइमिंग वर्ड्स को कभी भी होमोनिम्स के साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन राइमिंग वर्ड्स एंड होमोनिम्स. क्योंकि राइमिंग वर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं वर्ड्स हैविंग द सेम एंडिंग साउंड, और जब वर्ड्स का हमारे पास कंप्लीट साउंड एक जैसा हो फिर इसको हम होमोनिम्स कहते हैं. अक्सर बच्चे राइमिंग वर्ड्स और होमोनिम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपने ये रखना है कि होमोनिम्स में हमारे पास मुकम्मल का मुकम्मल लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के साथ प्रोनाउंसिएशन में सेम होता है, जबकि राइमिंग वर्ड में सिर्फ लास्ट एंडिंग साउंड ही सेम होता है. एग्जांपल ऑफ राइमिंग वर्ड की अगर हम बात करें, बेड, केट, मेड, टिन, बिन, पिन, नीड, फीड, रीड. कंपाउंड वर्ड, inshallah we will discuss compound word in the coming lecture. Topic
جس کا نام ہے ٹائپس آف ورڈ آن دا بیسس آف فارمیشن. اس میں کمپاؤنڈ ورڈ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا بھی تو آپ اس طرح سے نہیں سمجھیں گے. This was all about type of word on the basis of meaning. میں ذرا اپنے ٹاپک کو سماپت کرتا ہوں. میں نے ٹائپ آف ورڈ آن دا بیسس آف میننگ کو شروع کیا تھا. میں نے لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے ٹائپ آف ورڈ آن دا بیسس آف میننگ سے. مطلب کہ دو الفاظ ہیں ان کے درمیان ہم اس میں ایک ریلیشن شپ پڑھتے ہیں کہ ریلیشن شپ کیا ہے. ٹائپ آف ورڈ آن دا بیسس آف میننگ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ٹو ورڈس کے درمیان ریلیشن شپ ہے. مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے اسمال اور دوسرا ورڈ ہے لارج. اگر میں ان کے درمیان ریلیشن شپ پڑھتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ This show that کہ small is opposite to large. تو اس ریلیشن کو ہم نے نام دیا تھا اینٹونیمز کو. پھر میں ایک اور ورڈ لیتا ہوں, ایک ہوتا ہے لارج اور ایک ہے ہیوج. اگر میں اس کے درمیان ریلیشن شپ پڑھتا ہوں تو یہ ہے کہ اسمال بھی لارج بھی بڑی چیزوں کہتے ہیں, ہیوج بھی بڑی چیزوں کہتے ہیں. مطلب کہ ایک ایگزیکٹلی سیم ریلیشن شپ ہے. تو پھر ہم نے اس کی ریلیشن شپ کو نام دیا تھا کس چیز کا؟ سینونیمز کا نام دیا تھا. میں دو ورڈز اٹھاتا ہوں. فار ایگزامپل میں اٹھاتا ہوں ویسٹ اور دوسرا اٹھاتا ہوں ویسٹ. میں ان الفاظ کے درمیان ریلیشن شپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ these words are similar in their pronunciation but different in their meaning. تو اس ریلیشن شپ کو ہم نے نام دیا تھا ہومونیمز کا. میں دو اور ورڈز اٹھاتا ہوں, ایک اٹھاتا ہوں کیٹ کو اور ایک اٹھاتا ہوں بیٹ کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں اس کے درمیان جب ریلیشن شپ کو پڑھتا ہوں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو لاسٹ ورڈ ہے اس کا پروننسیشن سیم ہے جبکہ یہ ڈفرینٹ ورڈ ہے فرام ایچ ادر. اس ریلیشن شپ کو ہم نے نام دیا رائمنگ ورڈز کا. تو دس واز آل اباؤٹ سینونیم, اینٹونیم, رائمنگ ورڈز اینڈ ہومونیمز. آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دی بیل آئکن اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر ود یور فرینڈز. تھینک یو.